Dear students, today we will discuss about heating appliances. In this, primarily let us start with the introduction. In this chapter, we need to learn number one is the working principle of a heating appliance. Second, main components of a heating appliance and parts. Third is construction, working and different testing methods. Now let us try to understand what is a heating appliance. See, the appliances which generate heat on their operation are called heating appliance. मतलब जो भी अपन चलाने से वो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको अपन हीटिंग अप्लायंसेस बोलते हैं. एग्जांपल्स क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन, राइस कुकर इन द सेंस इट्स इलेक्ट्रिकल वन, वाटर हीटर, माइक्रो ओवन एटसेट्रा. Okay, now let us see what do they do. See, I mean exactly what they do, let us discuss that. They convert electrical energy into heat energy. This transformation of electrical energy is called heating effect of electric current. All the heating appliances works on this principle. Okay, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करेगा. जो भी अपन इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे उससे क्या हो रहा है? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको ही बोलते हैं. जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ये पूरा जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर ही काम करेगा. ओके, now let us try to understand what is a Joule's law. We have learned when current passes through a conductor, heat is produced. Okay, जब भी कंडक्टर से करंट जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसमें हीट प्रोड्यूस होता है. वो पहले अपना को मालूम भी है. Now, if you want to find out how much quantity of heat is produced, then Joule has explained it as heat H is proportional to I square RD by J. That is, heat produced is directly proportional to the square of the current, to the resistance and to the temperature divided by Joule, which is a constant, the value of which one is 4.2. So this is very important formula. All the electrical student must learn and memorize this formula. Now let us see what are the main components in any heating appliance. Okay. So this we are discussing for all the appliances. Whatever may be the heating appliance, generally you will find that all these parts will be available. Apart from this, there may be some other parts also. But the most common parts are these. So now let us try to understand all of them. First, let us see what are the parts. See, this part which is called as a heating element is a common for all appliances because heat is to be produced. So this is the very commonest among all the heating appliances. So heating element, the purpose of this one is to produce the heat, and the shape may be any type like rod type or shape, square type or a round shape. Generally it is made of nichrome or canthone. Now let us see the other appliances. See, in appliances we have two varieties. One is called non-automatic, the other one is called automatic. So what is non-automatic? Non-automatic is also called as a manual. In the sense, there will be no thermostat. You have to use hand to switch on and off during its entire working or operation. मतलब जो भी नॉन ऑटोमेटिक है या उसको मैनुअल भी बोलते हैं, उसमें थर्मोस्टेट नहीं रहेगा. उसका एंटायर ऑपरेशन जो है अपन अपना खुद स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज नॉन ऑटोमेटिक और ए मैनुअल टाइप ऑफ अप्लायंस. Then second is the automatic type. See, what do you mean by automatic? Suppose if there is a thermostat present in that particular appliance. So this is called as a automatic type of appliance. मतलब क्या होता है? उसमें अपना फिजिकल प्रेजेंस का कोई ज़रूरत नहीं है. वो अगर से एक बार अपन स्विच ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाएगा बिकॉज थर्मोस्टेट विल बी वर्किंग एंड इट विल बी डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सप्लाई व्हेनेवर इट रीचेस द प्रीसेट वैल्यू. So that is the meaning of a automatic appliance. Then all the appliances also require this thermally insulated power cord. Power cord should also be a thermally insulated one. You need more insulation because these all the appliances will produce a heat. So that is the reason. Now try to understand what is a thermostat. Okay. It is one of the very important component in all electrical appliances. Whether it is heat oriented or cold oriented, but every instrument or every appliance will have a thermostat nowadays. Thermostat is like a thermometer.
Okay, so it's like a thermometer which is used to test your body temperature. Here, that is why thermostat is called temperature sensing device. Hence, it controls the temperature and disconnects when it reaches the preset temperature is reached. तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, आप एक बार उसको फिक्स करें, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही उसका टेम्परेचर रीच हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेगा. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. फॉर एग्जांपल, if you fix a knob of water heater in medium, okay, suppose let us see that you are going to a water heater where you find on the knob, low, medium and high. Okay, the heating element starts working and heats up water till it reaches medium. अपन एक बार मीडियम में फिक्स करें तो ऑटोमेटिकली वो हीटिंग एलिमेंट को स्टार्ट करेगा, वो जो है मीडियम आने तक वो बिल्कुल काम करेगा. यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लो, मीडियम एंड हाई आल्सो. ओके, so 0 degrees is generally, we all know that is a icing temperature where water will be get freezed and it will become an ice. 100 degrees is the boiling temperature. So generally when you say it is medium, in the sense it will be around 50 degrees, somewhere near to that one. So now it has reached where the knob is already fixed by you to the medium. Hence TS will automatically disconnect from the supply. To adjust the temperature of a thermostat, it will have a control knob like a fan regulator. Electrically, TS is connected in series with the supply. Okay, generally जो है thermostat जो है supply से अपन series में connect करते. तो now जो है अभी we will try to understand what is the thermostat mechanically. Mechanically thermostat क्या चीज होता है? This also we need to understand. You see, it is a bimetallic strip. Bimetal मतलब two metals रहता. It works on the principle of linear expansion of metals. It has two contacts. One is fixed contact. This fixed contact is made by iron part, which cannot be expanded quickly. Other contact is made up of brass. When temperature of TS reaches the fixed value, this brass contact expands and opens the contacts and disconnects from the supply. Now let us try to understand from the figure. Okay, see, now you see this is a thermostat which will have a two contacts, like one is a fixed contact, the other one is a movable contact. So whenever you now in the earlier case we have fixed it on the medium, let us say. So whenever it has reached the medium, this bimetallic strip automatically it expands and this will be pushing this contact upwards, whereby it will be disconnected from the supply. मतलब अगर से अपन ऑलरेडी इससे पहले केस में देखे थे अपन, वो मीडियम में फिक्स करा हुआ है, यहाँ पे दोनों भी कांटेक्ट है, तो जब मीडियम में है वो नॉर्मली ऐसे टच होके ये कांटेक्ट दोनों भी लग के रह के काम कर रहा था. जैसे कि वो मीडियम में आ गया, ये बायोमेटालिक जो थर्मोस्टेट काम करके ये कांटेक्ट को ढक लेगा, तो यहाँ से यहाँ चले जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगा. ये जब भी फिर से अगर से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिस कांटेक्ट विल बिकम अगेन नॉर्मल एंड इट स्टार्ट्स रीफंक्शनिंग. ओके, लेकिन यहाँ पे अपन एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू नोट इज थर्मोस्टेट शुड नॉट बी सेट फॉर टू हाई टेम्परेचर्स. तो आप अगर से अपना घर में वाटर हीटर है तो आप उसमें कभी भी मैक्सिमम लेवल पे नहीं रखना चाहिए. दैट इज नॉट एडवाइजेबल. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मोस्टेट्स. ओके, there are two types of thermostats. One is a bimetallic type, the other one is a hydraulic type. Okay, even in bimetallic also there is one helical coil type and second one is a flat blade type. Okay, see, these are all the shapes based on the design of the appliance. They will be used at one or the other places. Okay, generally flat blade type we can see them in electric iron and toaster. Okay, the hydraulic type, okay, it operates on the expansion of liquid. हाइड्रोलिक टाइप जो रहता है वो जनरली क्या है, वो लिक्विड्स एक्सपेंशन होने का प्रिंसिपल के ऊपर काम करता. सो जनरली दिस इज यूज्ड इन फ्रिजेस एंड एयर कंडीशनर एंड अदर अप्लायंसेस. नाउ सी फ्लैट बेड टाइप वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए हाइड्रोलिक टाइप हियर. सी इन let us take an example. Here we have taken a fridge for reference. Okay, this is called as a deep freezer. ओके, जनरली टेक्निकली वी कॉल इट कैसे कूलिंग कॉइल. कूलिंग कॉइल में क्या रहता है, ये पूरा कूलिंग रहता. इसके नीचे जो है एक थर्मोस्टेट का कैपिलरी बल्ब फिक्स करके कैपिलरी ट्यूब से ये यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ रहता. ओके, जब भी ये जो टेम्परेचर में फिक्स किया हुआ है
वो टेम्परेचर में आने के बाद क्या होता है, इसमें जो लिक्विड रहता है वो एक्सपैंड हो जाता, एक्सपैंड होके ये ट्यूब से होके यहाँ पे आके बाई मेटालिक स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट को दूर कर देता, तो उससे क्या होता है, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता। दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग।